अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सदल सईद नेटवर्क एंड वीजफुल एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा एसडीएन सीरीज चल रहा है और ये है एपिसोड 5। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। द डिसीजन प्लेन which computed the forwarding state for the devices in the network, data plane which forwarded traffic based on decisions made by the decision plane। डिसीजन प्लेन में फैसला होता है, वही बात है जो मैं पुराने लेक्चर में कही। अगर समझ नहीं आए तो प्रीवियस सेशन देखें। और पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिसीजन प्लेन में फैसला होता है कि डेटा किस तरह फॉरवर्ड होगा। डेटा प्लेन में वो डेटा फॉरवर्ड होता है जिस पर डिसीजन कंट्रोल प्लेन ने लिया होता है। एंड द डिसेमिनेशन एंड डिस्कवरी प्लेन्स which provide the decision plane the information that it needs to compute the forwarding state, which ultimately gets pushed to the data plane. Around 2008, these concepts effectively hit the mainstream through a product called OpenFlow. OpenFlow's intellectual roots are with RCP and 4D, but OpenFlow has made practical when merchant silicon vendors opened their application programmer interfaces so that switch chipsets could be controlled from software. Suddenly, there was an emergence of cheap switches that were built based on open chipsets that could be controlled from software. यानी स्विच में डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन होता है ना, तो जाहिर बात है कि आप वो कंट्रोल प्लेन फैसला लेता है कि डेटा किस तरह जाएगा। तो वो स्विच तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस तरह जो तजुर्बा हुआ उसके मुताबिक क्या हुआ, उन्होंने वो अलग कर दिया। तो कंट्रोल प्लेन जब सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने चलाया तो वो स्विच काफ़ी चीप हो गए, सस्ता हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा प्लेन था जो डेटा को फॉरवर्ड करता था। This development effectively allowed us to decouple the control plane and data plane is in commodity switching hardware। अब इस आइडिया के बाद लोगों ने SDN पर काम स्टार्ट कर दिया। SDN में हम ऐसा करेंगे कि कंट्रोल प्लेन जो है वो फैसला जब हम लेंगे कि डेटा किस तरह जाएगा, डिसीजन लेंगे वो हम सॉफ्टवेयर के जरिए लेंगे, और जो डेटा प्लेन होगा वो हार्डवेयर के अंदर ही होगा जिसमें डेटा फॉरवर्ड होगा। SDN has many advantages over conventional networks। अब कन्वेंशनल नेटवर्क की बनस्पत SDN क्यों बेहतर है, चलिए जानते हैं। मतलब है कि हम SDN एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। It's easier to coordinate behavior among a network of devices। The behavior of the network is easier to model, and it's also easier to reason about. These characteristics are all rooted in the fact that the control plane is separate from the data plane. Having a separate control plane or control program allows us to provide conventional technique to halt networking problems. So as before, it was incredibly difficult to reason about or debug network behavior if the network behavior is now controlled by a logically centralized control program. We can use techniques from programming languages or software engineering to help us reason about the behavior of the network as far as SDN's software-defined networking infrastructure is concerned. The control plane is typically a software program written in a high-level language such as Python or C or another, and the data plane. On the other hand, the data plane is typically programmable hardware that is controlled by the control plane. The control affects the forwarding state that's in the switch using control commands। मतलब क्या, मतलब ये ऐसा अल्फाज में इंसार होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसे हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंटरेक्ट करता है यानी उस डेटा प्लेन के साथ, और डेटा प्लेन जो है वो बिल्ड होता है हार्डवेयर में, और उस हार्डवेयर में ऐसा प्रोग्राम होता है कि वो डेटा प्लेन उस कंट्रोल प्लेन के साथ लॉजिकली इंटरेक्ट कर सके, ताकि कंट्रोल प्लेन जो डिसीजन ले वो डेटा प्लेन उस पर अमल करके डेटा को फॉरवर्ड कर सके। द कंट्रोलर affects the forwarding state that's in the switch using control commands। OpenFlow is one standard that defines a set of control commands by which the controller can control the behavior of one or more switches। अब OpenFlow क्या चीज़ है, एक स्टैंडर्ड है ना, एक रूल है जिसके जरिए कंट्रोल कमांड जो है ना उसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप कंट्रोल कर सकते हो एक क्या है मल्टीपल स्विचेस को, यानी आप कंट्रोल प्लेन में डिसाइड करोगे कि डेटा किस तरह जाएगा। फिर डेटा प्लेन जो उसमें प्रोग्रामिंग हुई होगी ना उस हार्डवेयर में जिसमें डेटा प्लेन होगा, तो वो फिर डेटा को फॉरवर्ड करेगा।
SDN has many applications including data centers, wide area backbone networks, enterprise networks, internet exchange points और IXPs, internet exchange points, यानी इंटरनेट के जो एक्सचेंज पॉइंट्स है ना उसमें भी SDN काम आता है, वे में भी डेटा सेंटर में भी बहुत सी एप्लीकेशन इस्तेमाल आते हैं इसके, एंटरप्राइज में भी यानी स्विचेस जिसमें होते हैं, इन होम नेटवर्क्स मॉडेम वगैरह की बातें हैं, जैसे हमारे पास सिस्को मेरा की है ना जिसमें आप रिमोटली मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हो. Later modules in this course will explore how software-defined networks can solve network management problems in some of these areas. In this course, we will focus on particular on the first three applications. अब ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में. अगर इस पर समझना है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड 6 देखना होगा, क्योंकि एपिसोड 5 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. सी यू नेक्स्ट सेशन. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.